Okay. Good evening, all of you. Thanks for joining. So, we as a powerful Gyan spread awareness on various health issues and considering that non communicable diseases like diabetes, high blood pressure, cancer are affecting a large number of people. So, it has become important for all of us to know about how to maintain a healthy lifestyle, right? And one of the most important part is what is a healthy diet. And within diet, one of the most important things we need to know is in this consumer ages, becoming aware of the amount of sugar which we unknowingly consume through various packaged foods. So, Miss Malvika Fulwani has made a wonderful poster on this topic in the poster competition we had organized, the Powerful Gyan had organized. So, we thought of collaborating with her and having a webinar on this crucial topic of how can we have a balanced diet. So, yes, we welcome her in this webinar and I request her to start with the webinar. Thank you so much, Teja. Thank you. Yeah, that was an amazing. So I am keeping a check on all the posts that everyone who had participated in the competition. That's such a lovely competition. Got to learn. I have been learning a lot myself, and thanks for the opportunity to participate there, and as well as to taking this session today. We, about which I am so passionate because I have seen I have first-hand experience of how nutrition help people lead a better lifestyle. And it is rightly said, prevention is better than cure. So, as you said, the diseases that are happening, we can actually get have a holistic lifestyle to actually better combat these diseases, prevent these diseases rather than actually curing them later. So, my session. Let me just share my screen and then we are good. Yes. Also, I'm requesting the participants if they can keep their videos on, Yeah. it will be And great. also, if they have any questions in between, they can ask. And please keep a check on the chat box if there are any questions or if there are any Sure. answers to the questions. I keep on asking. It's going to be a little 25 minutes talk, but I would really want you all to be awake, for which I'll keep asking you questions, and we'll have an interactive session. Okay, so yeah, looking forward to it. So I am a clinical dietitian with 8+ years of experience in clinical nutrition. So basically, this is something I always tell, that it's very important to tell your credentials because there are a lot of quacks out there. So I am qualified dietitian by the Indian Dietetic Association with 8+ years of experience in clinical nutrition, and my passion lies in metabolic disorders like hypercholesterolemia, heart diseases, hypertension, diabetes. In diabetes, special focus on gestational diabetes and people living with type 1 diabetes. I am also certified nutrigenetics counselor. What is nutrigenetics? It's like, your genes and how you should be eating as per your genes is what it is all about. So today we are talking about better life with better nutrition. Okay, as I said, so I'll start with a recent experience. One of my friend's grandmother, who is aged 90, underwent a bypass surgery, heart bypass surgery. And while everyone, जब जहाँ सब लोग बोल रहे थे इस एज में सर्जरी कराना जरूरी था क्या, क्यों करवाया, मेरा ये सोचना था यार, आज के डेट में जब 35, 40, 45 इयर्स के लोगों का बाईपास हो रहा है, दादी का bypass 90 years में हुआ. What is the difference? Why her bypass was at 90 and why today's generation is undergoing bypass half the age what dadi is? So that's when I actually discussed this topic with each and everyone I was discussing and debating about why did the surgery happen. And that's when we realized that the nutrition they had, the food they were eating, the lifestyle they were living, and the lifestyle we are living today. And with
the 2 years of COVID, we have actually changed our complete lifestyle. Everything is work from home. I am do like everything is work from home. You are home. I am home. We are sitting in front of the camera and we have to sit. So, this is the lifestyle that we have actually. So, such a big difference, such a big gap. Also, there's a lot of pollution out there, which during during daddy's age it wasn't. So, can we prevent ourselves from having the bypass surgery until 90? Yeah. So, this World Health Day, when I was talking on webinars, I told everybody, what is health? Health is not just, absence of disease. It is adding life to your years. So ऐसा नहीं है, a lot of people say मैं तो कोई मत दवाई नहीं खाता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कभी भी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो कभी बीमार नहीं होता। इस पे जब मैं हिस्ट्री में पूछती हूँ, आप बराबर सोते हैं, आप 8 घंटे की नींद कर रहे हैं? नहीं, मुझे नींद नहीं आती, मैं ना बहुत लाइट स्लीपर हूँ, 1-2 बजे तक तो नींद नहीं आती, फिर उसके बाद थोड़ी नींद आती है तो 4 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ। So this is not deep sleep. And if you're not sleeping deep, your happy hormones, the dopamine and serotonin are not working well. That means you're somewhere or the other, you're not healthy. We need to manage the four pillars of holistic health. That is, health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So today we are going to discuss on how to actually ensure that we are living holistically. Believe me, it's not a rocket science. It is something we used to do when we were children, when we were kids. Until school times, until class 10th, we lived holistically. But after college, 11th, 12th, हमारी जो सीईटी की एग्जाम्स और ये सारा टेंशन जब बढ़ने लगता है, तो हम रात में जागना शुरू करते हैं, एंड उससे हमारा मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ अफेक्ट करता है, एंड दैट्स व्हेन फिजिकल हेल्थ आल्सो स्टार्ट्स गेटिंग हैम्पर्ड। एंड फिर उसके बाद शिफ्ट्स में काम करने के बाद और प्रॉब्लम्स होती है ना। सो लेट्स गेट टू नो हाउ वी कैन एक्चुअली एंश्योर होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक हीलिंग के जो मैंने 4 पिलर्स बताए थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, हम चारों पे बात करेंगे। फर्स्ट वी आर टॉकिंग ऑन फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ के भी, फिजिकल हेल्थ मतलब जो आपको दिखता है ना, उसमें हम लोग 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक बेटर न्यूट्रिशन टू हैव अ बेटर लाइफ। सेकेंड है एक्सरसाइज, थर्ड है स्लीप, जो मैंने बोला कि अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो लेस रहेगा। उस वजह से डोपामिन, सेरोटोनिन, आपके जो फील गुड हार्मोन्स है, मूड बूस्टिंग हार्मोन्स है, वो प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा, जिस वजह से गट हेल्थ आपका हैम्पर होगा, एंड ओवरऑल मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से यू विल सी द रिजल्ट्स लेटर if now you are not having medicines. And fourth is habits. So yeah, habits pe we have a very good stack on Powerful Gyan, wherein they say no amount of alcohol, tobacco, smoking is good for health. Do check out their Instagram page. They are actually always talking about how to get rid of these habits. It's very important. When we come onto that slide, we'll try to stop sharing and get to talk to someone from the team as to how we can help it. So we now let's get into nutrition. Nutrition is, you are what you eat, is rightly said. Like I have actually seen a change in the trend when in 2015 I had first entered into the field of diabetes. Everybody out there was used to say, एक बार diabetes हो गया तो गोलियां बंद नहीं होती, वो गोलियां बढ़ती ही जाती है। लाइक पहले 1 गोली होती है, फिर 2 होती है, फिर 4, और फिर उसके बाद you have to end up taking insulin. But come down to 10 years later, 9 years later, in 2024, everybody is talking about diabetes remission. That is stopping the medicines for diabetes. How is it happening? Have you actually thought of, like, is really diabetes stopping?
like, is everyone actually stopping to take the medicines? Yeah, the remission is possible, but it is with the help of lifestyle modification. And lifestyle modification is a good reduced calorie diet with proper exercise, losing weight, and actually remitting diabetes. So here we are today discussing nutrition. So first and foremost in balanced nutrition comes is carbohydrates. Like, especially when we talk about Indian population eats a lot of carbohydrates. Our diet are rich in carbohydrates. हम रोटी चावल ये ज्यादा खाते हैं, एंड दाल या नॉन वेजिटेरियन भी कोई है तो वो हफ्ते के पूरा हफ्ता दिन में 3 बार नॉनवेज नहीं खाता है, because of and it's not actually recommended to eat non-veg 3 times because of the weather and the altitudes and longitudes we stay in. So our diets have become high in carbohydrates. Is carbohydrate so basically the first question out there for my audience is carbohydrate really the culprit? Do you think carbohydrates are harmful? And nowadays people are getting into this fad that keto diet करना चाहिए, जहाँ पे zero carbs होने चाहिए या high protein diet करना चाहिए. What do you think? Is carbohydrate really a big problem? Or what is the problem as per you? Is it protein or is it fat? What do you think? Yes, Tejal, what do you think? What is the big time problem in diet? So it's okay. I would really like to see if you have the answers on the chat box. So believe me, carbohydrate, protein, or fat, none of them are culprits unless and until you take them in moderation. Okay. If you are taking complex carbohydrates and simple carbohydrates in a mentioned proportion, like complex carbohydrates आपकी diet में ज़्यादा है, जो हमको whole grain से, सब्जियों से, fruit से, pulses से मिलते हैं, वो आप अगर आपकी डाइट में ज्यादा रखते हैं, और आपके जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमको स्टार्ची फूड्स शुगर से मिलते हैं, ये चीजें आप कम रखते हैं आपकी डाइट में, तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स यू एनर्जी. इट इज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, एंड ये ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है. अभी मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सारे चीजों के लिए हमारा न्यूरॉन नेटवर्क काम कर रहा है. उनको काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इट इज ग्लूकोज व्हिच ब्रेक्स डाउन इनटू एटीपी एंड गिव्स यू एनर्जी. अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कल्प्रिट बना देंगे, तो आप जब प्रोटीन खाते हैं या फैट खाते हैं, उनका डाइजेशन जो है वो स्लो एंड स्टेडी होता है, और उसका ब्रेकडाउन पहले कुछ दूसरे कंपाउंड्स में होता है. वो कंपाउंड्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने को और टाइम लेते हैं. सो इंस्टेंट एनर्जी, लाइक अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है, ड्राई हो गई है, तो हम क्या करते हैं? इंस्टेंटली हम जाते हैं, एक बॉटल लेते हैं, उसमें पेट्रोल भर के आते हैं, गाड़ी में भरते हैं, गाड़ी को पेट्रोल. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? आपके स्कूल में कभी कोई असेंबली में चक्कर खा के गिरी लाइक कहीं आपने ऐसा देखा है कोई चक्कर खा के गिरा है तो उनको जल्द से जल्द शक्कर का पानी पिलाया जाता है? क्यों? क्योंकि तुरंत ग्लूकोज मिलेगा, तुरंत पेट्रोल मिलेगा गाड़ी को, तो वो जो ड्राई स्टेट थी गाड़ी की, वो अच्छी, लाइक इट विल एक्चुअली स्टार्ट एंड यू कैन एक्चुअली गो टू द पेट्रोल पंप. वही है, आप शक्कर का पानी इसके लिए पिलाते हो ताकि ये हम उसको मेडिकल रूम तक के लेके जा सके. सो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब, जैसे मैं बोल रही थी, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर नथिंग बट फाइबर विच वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, होल फूड्स. हमें वो चीजें हमारे डाइट में, ऑर्गेनिक फूड्स हमारे डाइट में ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि फाइबर हमें टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के बाहर फेंकने को हेल्प करता है. वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर मील. मेरे हिसाब से, या फॉर दैट मैटर गाइडलाइंस बोलती है कि यू शुड इंक्लूड 30 वेजिटेबल्स अ वीक. सो इट्स वेरी इजी, ऐसा इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट. ब्रेकफास्ट में एक सब्जी, लंच में एक सब्जी, डिनर में एक सब्जी, और एक सैलेड के फॉर्म में लंच या डिनर में हमने एक रॉ वेजिटेबल ले लिया, तो ऐसे 4 सब्जियां पर डे तो हो गई. एंड 4 7 अगर आप देखो तो 28 वेजिटेबल्स आर यू आर डन इजीली. So that's how you have to include 30 vegetables. Make sure that you're taking colorful fruits and vegetables. Each and every color of fruit and vegetable play a different role in our body. Red color fruits and vegetables are high in
लाइकोपीन एंड बीटा कैरोटीन, वो आपके आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं. येलो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एंटी इंफ्लेमेटरी. Green colored fruits and vegetables have chlorophyll, and we have studied photosynthesis in earlier in school, and how chlorophyll के presence में photosynthesis होता है, and food and plants make their own food. So chlorophyll rich green leafy vegetables, green fruits help us with that energetic boost, and so you should have green fruits and vegetables. Next nutrient that we talk about is omega-3 fatty acids. Like I already mentioned the 2 years of COVID, उसके बाद से we all know this word immunity. हिंदी में जिसे रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं. ये रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस पढ़े, but one thing that plays a very important role in increasing or boosting your immunity is omega-3 fatty acids. They are antioxidant in nature, and so you should, as I was saying, that fats are not culprits. So fats हमारे डाइट में definitely बहुत important है, क्योंकि हमारे डाइट में, हमारे बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, विटामिन्स ए डी ई के, वो फैट के प्रेजेंस में ही काम करते हैं. अगर आप फैट, देर आर पीपल एंड हु आर डूइंग दिस zero fat cooking or water cooking, so they lack in these their diet lacks in fat. They are also deficient in fat soluble vitamins. So everything in moderation is important. आप तेल नहीं लेना तो ऑप्शन ही नहीं है, बट बहुत ज्यादा लेना भी ऑप्शन नहीं है. आपको मॉडरेशन में लेना है. आप कौन सा तेल यूज करें, आप ऑलिव ऑयल यूज करें, आप राइस ब्रान यूज कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता. क्वालिटी डजंट मैटर बट द क्वांटिटी मैटर्स. आप पूरे दिन में तेल जो है 4 से 5 चम्मच तेल, 1 चम्मच, आधे से 1 चम्मच घी, टीस्पून की बात करें, उतना आप आपकी डाइट में यूज कर सकते हैं. जस्ट बिकॉज आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप 50 ml यूज करेंगे, नहीं. ऐसा नहीं है कि आप 50 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं बढ़ेंगे या आपको ब्लॉकेजेस नहीं होंगे. सो इसके लिए फैट कितना, इट्स ऑलवेज अबाउट क्वांटिटी नॉट द क्वालिटी. एंड omega-3 fatty acids help improve your good cholesterol, that is HDL cholesterol. So उसको भी थोड़े क्वांटिटीज में आपके डाइट में लेना जरूरी है. So you can have a handful of almonds, walnuts or pistachios, even seeds like chia, flax and sesame seeds help a lot with omega-3 fatty acids. Again, there is a caution, keep a track of quantity, because omega-3 fatty acids help you boost immunity. तो आप ऐसे आधा किलो almonds एक दिन में खा लेंगे, that doesn't work. They also have calories. It will add on to your calories और फिर वो आपका weight gain वगैरह करने में problem करेगी. So a handful is a handful, like 8 to 10 pieces is what you are good to go with. Now comes protein. Protein तो सभी को पता होता है. मतलब अगर आप कभी भी जिम गए हो या फिर आपने कभी भी डाइट रिलेटेड किसी से बात की हो, या अभी आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील्स पे प्रोटीन इज लाइक अ बिग थिंग. सो इज एक्चुअली प्रोटीन सो वर्थ द hype, or it's just the hype? What do you think, the audience? What do you think? Is protein really important, or it's just the hype ki protein बना के रख दिया है? So protein is worth all the hype, because हमारे बालों से लेके तो पैरों के नाखून तक everything is protein. The whole tissue. Khadija ma'am wanted to say something. Yeah. Yes, Khadija ma'am. What? Yes, I was just going to tell you that protein is very important and it is an essential thing for the body because एक muscle structure के लिए, because I used to discount it a lot. That is the reason I am saying that it is really very important. Yes, so true, so true. Protein are like from बालों से पैरों के नाखून तक के, it's everything protein. अभी मैं immunity की बात कर रही थी पिछली स्लाइड में. तो इम्यूनिटी कहाँ से होती है? एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती है, तभी इम्यूनिटी बढ़ती है. अब ये एंटीबॉडीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलते हैं. तो ये जो ग्लोब्युलिन पार्ट है, दैट इज प्रोटीन. हीमोग्लोबिन आजकल like every 7 out of 10 girls are anemic.
तो हम लोग उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, फिर उसके बाद घर वाले बोलते हैं अब तो रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना शुरू कर. रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नो डाउट विल गिव यू आयरन, okay, but what about that is iron, that is heme part, but the globin part is protein. If your diet is not rich in protein, that means hemoglobin is a little difficult to form. So you need to have proteins in everyday meal. Like it's so important, you should actually have proteins in every major meal. So 3 protein sources a day is what is very important. Break the protein through the day, add some protein in every meal from either animal or plant sources like beans, legumes, tofu, chicken, fish, eggs, yogurt, cheese, dairy alternative, nuts and seeds. Now the question comes, is vegetarian protein worth, like वो सही है या नॉनवेज खाना शुरू करना जरूरी है मैम? तो vegetarian proteins are not real, like vegetarian proteins are said to be of secondary quality because the proteins we get from legumes, that is दालों से हमको अंकुरित अनाजों से जो प्रोटीन मिलता है उसमें एक अमाइनो एसिड कम है, ठीक है, उसकी वजह से हमको पूरा प्रोटीन नहीं मिलता, इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन. पर द सोल्यूशन इज कि हमारे जो सीरियल्स है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, उसमें भी एक प्रोटीन, एक अमाइनो एसिड कम है. तो द सोल्यूशन इज आप सीरियल और पल्स को कंबाइन कर दो, विच विल गिव यू अ कंप्लीट प्रोटीन. सो हमारे सारे ट्रेडिशनल डिशेस आर सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. लाइक दाल चावल की खिचड़ी, द इजिएस्ट इंडियन ट्रेडिशनल मील एंड सबकी फेवरेट. चावल इज द सीरियल, dal is the pulse. When you combine together, it's a good source of protein, good, again nicely digestible, and you are good to go. Secondly, हमारा सबसे unhealthy dish जो हमारे traditional dishes में आता है वो है छोला भटूरा. But again, it's a complete source of protein. Bhatura is a cereal from maida. Pulse is chola. When combined together, बट उसमें और दूसरी चीजें है, डीप फ्राइड रहता है, मसालेदार रहता है, इसके लिए उसको अनहेल्दी बोलते हैं. इडली सांबर हो गया हमारा, डोसा सांबर हो गया, ये हमारे नागपुर में पोहा चना मिलता है, तो पोहा इज सीरियल, पल्स इज चना. सो कंबाइन टुगेदर एंड form a cereal pulse combination and try to have it in every meal, in your meal, that is breakfast, lunch and dinner. Next comes adequate hydration. This is the most underrated. अभी गर्मियों में तो I see so many people suffering from dehydration, but it is something that we all should actually make it a part of our daily lives. Okay, water in itself is a detox. इतने सारे लोग, अभी होली हुई ना, होली की पार्टीज के बाद I got calls from around 4 to 5 people to tell them detox diets. Detox diets में क्या होता है? लिक्विड डाइट्स होती है, आप सूप पी लो, छाछ पी लो, नींबू पानी पी लो, कोकोनट वाटर पी लो, पूरे दिन में सिर्फ लिक्विड्स पियो, कुछ भी खाओ मत. What is the principle behind this? It is to increase the fluid content of your diet. Why do you want to go on any specific fad liquid diet when you can actually detox your body every day with 10 to 12 or more glasses of water? But when taking history, whenever I take history, it's a 45-minute task that I do with every client. I see 4 out of 5 people, male, female, kids, not drinking more than 8 glasses of water. So water is so important. Otherwise, देखो कैसा है, our body is 70% water. And it has to maintain 70% of water because all the biochemical cycles that are happening in our body involuntarily need water. So हमारी body 70% वो water को maintain करने के लिए जमा करके रखती है, जिसको हम water retention बोलते हैं, जिससे inflammation होता है, bloating होती है. So इसके लिए ये सब ना हो, इसके लिए we should include water, and adequate amount of fluid helps flush out toxins to urine. And if water taken, as I said, 10 to 12 glass आप per day लेते हैं, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑन डेली बेसिस होता है किडनी लिवर के थ्रू. आपको एक्चुअल में डिटॉक्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट हमारे गाइडलाइंस बोलते हैं 24 घंटे में से 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो 16 आवर्स जो आप जागे हैं उसमें आपने हर 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना है. सो लाइक दैट इज 16 ग्लासेस ऑफ वाटर एन आवर.
and that will be 4 liters of water. How many of you are drinking 4 liters of water? Or are you drinking 10 to 12 glasses? अभी तो बहुत गर्मी है. If you are not, increase 2 glasses of water, and every week go on increasing until June. We set into rainy season. Then you can actually manage, like cut down on 2 glasses, and stay at 12 at least until June. Water is very important. Now, क्या खाना है ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया, पर अभी कैसे खाना है? A lot of people, a lot many times tell me, आपने जो बताया ना मैडम हम वैसे ही खाते हैं, पर फिर उनकी हिस्ट्री में लो तो कुछ तब पता चलता है कि करके in one go they are having a lot of, like their portion sizes are very big. ठीक है, क्योंकि वो ऑफिस में जाते हैं, देन लंच टाइम्स आर ओनली फॉर 20 मिनट्स, दे जस्ट ट्राई टू. जब हम बहुत फास्ट खाते हैं, हमारे को जब हम लोगों को जब हम विदाउट एक्चुअली थिंकिंग दैट वी आर ईटिंग, विदाउट एंजॉयिंग द फूड खाते हैं, तो हमारे को जो सिग्नल्स मिलते हैं कि हम फुल है, ये चीज नहीं हो पाती है. इसके लिए माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस आर रियली इंपॉर्टेंट. लाइक पोर्शन साइज कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है. सो ईट स्लोली, chew your food very well, maintain portion sizes. So मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप फूड ले रहे हैं तो थोड़े अमाउंट में लीजिए, पहले वो खत्म कीजिए. आस्क फॉर अ रीफिल rather than actually, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ कि सर आप अगर खाना छोड़ देते हैं आपकी प्लेट में, दैट्स ओके. इट्स नॉट रियली ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आपने पूरा खत्म करना है. सो इट goes against Indian practices, religious practices that you know. So I always say कि ठीक है, फिर आप कम लीजिए, 2 बार 3 बार लीजिए. बट ऑल्सो सेकेंडली वीकेंड्स पे मैंने बहुत देखा है कि जब घर पे रहते हैं तो हॉल में टीवी होता है, हम टीवी देखते देखते, किचन इज वेरी नियर बाय, सो हम किचन में जाके like every 10 minutes we go to the kitchen, bring something, a cookie, a pack of chips or something like that. At that time you are not actually hungry, believe me, you are just bored. So whenever on weekends or on a holiday you are home, first try to drink a glass of water. Really inquire, are you hungry or you are thirsty or you are bored? And do whatever you can do accordingly, according to your feelings. This is a very good cycle, that is like observe, am I hungry or thirsty? Let go of the technology. Like जब आप खाना खाने बैठे हैं तब फोन टीवी साइड में रखिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अंडरस्टैंड द टेक्सचर ऑफ द फूड, the flavors of the food. Flavors in itself are so indulging, so mindful. You know, eating food becomes meditation for a lot of people who start eating mindfully. That's what the savor, the taste, non-judgmental ho jaiye, be aware, and this is how you should actually do mindful eating practices. This is the portion control. Yet again, this is what is important. फूड सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं तो थोड़ा पहले लीजिए, उसके बाद यू कैन गो फॉर फर्दर मोर थिंग्स. सर्विंग्स पर कंटेनर बहुत इम्पोर्टेंट है. फूड लेबल्स इफ यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर दैट चिप पैकेट ऑफ चिप्स, तो सी एक पोर्शन, एक सर्विंग में कितना आ रहा है. इट्स लाइक 7 to 8 चिप्स आते हैं पर सर्विंग. You don't have to have that whole packet at one go, because आपका जो snacking time है उसमें आपको कितनी कैलोरीज चाहिए है, उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर सकते हैं. and that's how portion control plays a very important role. It stops you from overeating, and overeating करने के बाद वही other gastrointestinal problems से it saves you a lot. It's very important. These are some things. If you don't have cups and spoons at home, this is how you can use your hand to actually control your portions. Now ये सब चीजें क्या खाना है और कैसे खाना है ये था. अब क्या नहीं खाना है. So always, this is something I always, in my first session with my client, personal session, I always get to hear, madam मैं ना बहुत बड़ी foodie हूँ, please don't stop me from eating. Believe me, you don't have to stop anything except for these 3 things, the 3 whites. You know, the gluten-free diet these days has become such a big hit.
No, a lot of people lost weight on gluten-free diet. No doubt, you will lose weight because when you are switching off the gluten in your diet, you are also switching off the maida in your diet. So अगर आप मैदा बंद कर रहे हैं, so just think क्या क्या बंद हो रहा है. Cakes, pastry, cookies, samosa, kachori, breads, pizza, everything contains मैदा. अगर ये चीजें बंद हो गई, तो आपका शुगर कंटेंट जो शुगर, केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज से आ रहा है वो बंद हो जाएगा. डीप फ्राइड चीजों से, समोसा, कचौरी से जो, तो ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस होगा. सो वन टेक अवे हियर इज यू डोंट हैव टू गो ग्लूटेन फ्री, यू हैव टू गो मैदा फ्री, दैट इज रिफाइंड फ्लावर. दैट इज वन ऑफ द वाइड्स दैट आई ऑलवेज से कि प्लीज अवॉइड टू हैव अ बेटर हेल्थ. तो अगर आपको बहुत एसिडिटी होती है या आपको ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो फिर तो आपने डेफिनेटली मैदा अवॉइड करना चाहिए. सेकेंड है व्हाइट शुगर. व्हाइट शुगर के 63 साइड इफेक्ट्स हैं. उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको क्रेव करवाता है, वो एडिक्टिव है, वो 8 times मोर एडिक्टिव देन अल्कोहल है. तो जो हम सुबह की चाय पीते ना, अरे मैं सुबह की चाय के बगैर तो रह ही नहीं सकती. कई बार it is not the tea that you are craving or you are addicted to, it's the sugar that you are addicted to. So avoid white sugar. And third is salt. Salt आपने बहुत limited quantities में लेना चाहिए because it is that like electrolyte maintenance के लिए important है. But too much excessive salt आपने avoid करना चाहिए because it leads to hypertension and water retention again. So, and last but not the least, avoid reheating of oil. Deep कभी वंस इन अ ब्लू मून आप घर पे कुछ डीप फ्राई करके बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे बाहर की डीप फ्राइड चीजों से प्रॉब्लम इसके लिए है क्योंकि अगर आप किसी समोसे की शॉप में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे कढ़ाई रहती है. उसमें एवरी डे द मैन puts half a liter of like half a डबकी ऑफ द तेल, एंड उसमें पहले एक बैच ऑफ समोसे बन जाते हैं. फिर उसके बाद तेल ठंडा हो जाता है, फिर ही मेक सेकेंड बैच, थर्ड बैच. ये तेल जो आपने एक बार ऑलरेडी गर्म करके ठंडा कर दिया है, आप फिर से उसको गर्म कर रहे हैं तो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है. द तेल वी गेट इन द तेल की बॉटल is in cis form, but after reheating it, the cis is converted to trans, and the more you heat the oil, the more cis gets converted to trans, and this trans fat is the culprit because we don't have enzymes to digest this trans fat. And ये trans fat क्योंकि digest नहीं होते, ये हमारे blood stream में घूमते रहते हैं, फिर उनको जहां भी जगह मिलती है वहां जमा हो जाते हैं, एंड वहां जमा होने के बाद उस पर लेयर ऑफ लेयर बनती जाती है, एंड फिर वो प्लाक बनाते हैं, and that's how you get the blockages, जिसकी वजह से हमको एंजियोप्लास्टी बाईपास करना होता है. and now you get the answer to the question कि दादी ऐसा क्या खाती थी और हम ऐसा क्या खाते हैं कि दादी 90 years में बाईपास करवा रही है एंड हमारे एज में 45-50 में बाईपास हो रहा है. so it is, our diets are full of trans fats. So now we come to the second, so this is how nutrition should be. If any questions, you can definitely put your questions on the chat box. I will see, I will try to answer once we finish. Then we come to the second pillar of the physical health, that is exercise. It is, I will never say, I have never said that weight loss or any health, like if you want to create a holistic health or if you want to reverse any health condition, it can be done by diet alone. No. Exercise, physical activity is equally important. In fact, abhi study hua hai recently. It says that sitting for a longer time is like smoking. So smoke के cigarette के packet में लिखा होता है smoking is injurious to health. Sitting for a longer time is injurious to health. आप अगर सुबह अच्छा heavy workout करके आ गए हैं जिम में एंड उसके बाद अब आप 8 घंटे स्ट्रेट बैठे हैं, इट इज ऑल्सो इंजरियस. अरे मैंने तो वर्कआउट कर लिया मैम, अब तो मैं बैठ सकता हूँ. नहीं, यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर सीट, do a little physical activity every 1.5 hours. That is what is very important, so as to not injure your health. So I always say it's not 80% diet and 20% exercise. It is 100% diet and 100% exercise. If you want a holistic health for yourself, a great lifestyle for yourself. So it's very important to
stay physically active. अब आप आज तक के कुछ नहीं करते हैं और कल 10,000 कदम चलेंगे, that's not right. That will actually make you sit further more. So start slow. First thing, choose an activity which is very makes you really feel enjoyable. तो अगर आपको walking पसंद है तो walking कीजिए. Start with 3,000 steps and go on increasing it exponentially. Like आज 3,000 steps चल रहे हैं तो कल 3,050 कीजिए, परसों 3,100 कीजिए. रोज increase करते जाइए in the same amount of time. And that's how you can actually, like in 2 months, you can reach 10,000 steps, or maybe in 1 month also you can reach 10,000 steps. Start slowly, gradually increase, listen to your body, and set realistic goals. Do not compare with anybody on Instagram. Please, social media doesn't tell you the right things. The third is sleep. This is something, it's very important. I'm not a mental health practitioner, but I have seen results, like amazing results, where I have actually helped my clients to sleep better, change their lifestyle, like have dinner around 8 and sleep within 2 hours to 3 hours of dinner, like around 11, and get up at 7. So 8 hours of sleep has helped a lot of my clients to actually combat diseases, chronic diseases, and get over the weight and everything. So deep sleep is a very important thing. This is a cycle. This is very important. Feeling worry, lack of sleep, उसकी वजह से tiredness, फिर अगले दिन difficulty, ये self low esteem, ये ना vicious cycle है. इसको break करने के लिए जो lack of sleep है ना, इसको ही हमको better करना है. तो sleep better and everything will go away. So this is so important. वो appetite regulating hormones और increased cravings, ये सारे हम रात को जागते हैं तो हम सबसे रात को जब जागते हैं तब थोड़ी fruits और सलाद खाते हैं. रात को तो हम chocolate लेंगे या तो फिर we'll end up having a chips का packet. Have you ever eaten a fruit at night while keeping awake at 1:30 or 2 a.m.? If you did, then you are really healthy. Yeah, you are always choosing health. But at 2 a.m., no one is going to eat fruits. They are always going to end up eating the chips of packet. And that's how appetite regulating hormones are disrupted. And that's why we gain weight and increased cravings. So sleep is very important. But नींद ही नहीं आती, madam. To sleep better, there are a few lifestyle practices that you can do. These are some practices, sleep hygiene practices that you can do. सबसे important जो मैंने मेरे लिए खुद के लिए, I have been a nocturnal and now today I am talking about sleeping at 11, is something I have actually seen doing changes to me big time. So पहले 2-3 years back I used to sleep around 3-4, but now I sleep at 11 because if switching my cell phone around 9:30 p.m. It is because ये जो screen जो हमारे phones में, laptops में जो light है, this is blue, like ये हमारे eyes पे जब जाती है तो it is taken as blue, and the blue light effect is something really that doesn't let you sleep. जब तक के वो blue light आपकी आंखों में पड़ती रहेगी ना, तब तक के आप सो नहीं पाएंगे. तो वो स्क्रॉल करते करते कब 3 बज जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट इफेक्ट. आप फोन को 9:30 बजे छोड़ दीजिए. आधे घंटे से पौन घंटे के अंदर, बिकॉज ऑफ द circadian rhythm ऑफ अ बॉडी, आपको नींद आ जाएगी. Our bodies are actually made up in that way. So this is one of the very important things मैं करती हूँ. आप लोग भी कीजिए. Secondly, रात 5-5:30 के बाद I always suggest not to take tea, coffee or anything like that. अपना रूम ठंडा रखिए, डार्क रखिए. एक्सरसाइज तो जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है. खाना और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप रखिए. एंड सेम टाइम पे अगर सोते उठते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. So yeah. Now habits. No amount of smoking alcohol or tobacco is safe or healthy, and quitting is the best option. Refrain from using tobacco products. Don't hesitate to seek professional help. Reach out to therapist or counselor. Of course, again, believe me, it's not a paid promotion, but please, if you or you know anybody else who has all of these habits, do follow Powerful Gyan on Instagram. They
a webinar before this was on how to get over tobacco and smoking. They are actually doing a lot of awareness about these habits, getting over these habits. After I finish, like we have another 2 to 3 slides to go. We'll also discuss with Tejal about what has been their experience with people trying to get over these habits. Okay. So yeah. Next comes this. Now we are done with the 4 pillars of physical health. Now we come to the second pillar of holistic health, that is mental health. So mental health in itself is a very big problem, challenge at the moment. Like बच्चे like मैं third और fourth में जब थी तब मुझे टेंशन ये वर्ड ही नहीं पता था. I used to be such a happy-go-lucky kind of a person, tomboy kind of. We used to play all day. आजकल तो बच्चों से बात करो बहुत टेंशन है मैडम. कल असाइनमेंट सबमिट करना है, कल ये करना है, कल वो करना है. Oh God, everybody talks about tension and stress, but it's very important to actually stay stress free, because जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन और वैसा रहेंगे आप. How your mood is, that is how you are going to be really. So try to have a better mental health. Practice stress reducing techniques. So basically I always say this whenever I take a session on holistic health. मैं जब भी सेशन लेती हूँ ना, मैं बहुत एंक्शियस रहती हूँ. लाइक मैंने तेजल को बोला मैं 4:50 को लॉग इन कर लूंगी, एंड 4:45 के आसपास में आई वाज लाइक मैं सेशन लू नहीं लू, सेशन लू नहीं लू, क्योंकि ना हर बार होता है. मतलब कितना भी मैं ट्राई कर लूँ मुझे वो शेकीनेस होती है. फिर मैं क्या करती हूँ, आई डू 6:6:6 काइंड ऑफ ब्रीदिंग. 6 सेकेंड्स के लिए आप ब्रीद इन करते हैं, 6 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड करते हैं, 6 सेकेंड्स यू टेक इट आउट. ऐसे 3 बार किया मैंने, and I'm here. Rest is history. I guess I am doing my work really well, and there's no shakiness at the moment. So yeah, to reduce stress, deep breathing exercise have helped me a lot. Meditation, of course. आपको जो जमता है, आपको डांसिंग जमता है, जुम्बा जमता है, एनीथिंग आर्ट. मेरी एक फ्रेंड है, कल ही मेरी उससे बात हो रही थी, वो मंडाला पेंटिंग करती है, एंड मंडाला पेंटिंग में उसको शी हैज गॉटन ओवर अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. तो आपकी जो भी हॉबी है, आपको जो भी पसंद है, थोड़ा टाइम निकालिए और अपनी मेंटल हेल्थ, सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा दीजिए. सपोर्ट, लाइक देर आर सो मेनी सपोर्ट ग्रुप्स आउट देयर. आपके फैमिली और फ्रेंड्स तो फर्स्ट line of support हो ही जाते हैं, but if they are not, like if you're not really free to talk to them, talk to these support groups. Nowadays I am a part of a group wherein there are ladies who are going through perimenopause or menopause. Even that is a very mental health affecting challenge phase of their life, but the support group that they have created and how they are actually helping each other is really commendable. You all can actually join whichever support group you feel like, and there are therapists and there are support to help you. Create an attitude of gratitude. It will actually help progress in your recovery journey. So now comes the third, spiritual health. Spiritually, I have done a lot of courses. Last year I went for Vipassana. I went to Igatpuri to do the 10-day course of Vipassana. And while I was going, a lot of people were like, "Ye age hai kya jane ki?" And I'm telling you, there is no right or wrong age to do spiritual. Spirituality is actually knowing your own self, being self-aware, being mindful of who you are. And when you know who you are, it's very important to know who you are, so that you can actually set boundaries and be really there. Mindfulness practices can help cultivate positive thinking by bringing awareness to the present moment. And last but not the least, social health. ये मैं already बात कर चुकी हूँ कि socially relationships, friend, family, इनको do connect with them, so that you have that feeling of belonging. And when you have this feeling of belonging, you do really wonders in your life and you can get over. So this is how holistically you can be. Takeaways: prioritize
holistic health for overall well-being and vitality. Prevention is better than cure, so holistic health is so important. Embrace balance in mind, body, and spirit. Cultivate habits that nourish every aspect of your being. Remember, holistic health is a journey, not a destination. Take small steps. Your health is the greatest wealth. Invest in it wisely. Let holistic health be your compass to a life of abundance and joy. Thanking you. Let's embark on a healthy attitude. Health is wealth we need to cherish. Thank you. I stopped my share and yeah. So the forum is open for questions. We'll ask Tejal. Tejal, how has been the journey of people with habits, or how has been the awareness that you're creating around tobacco and smoking? Of course, alcohol was also one of the deaths which participated during the the challenge. How has it been? Right. So when people call us on helpline and when they talk about if they have quitted for 3 months or 1 month, they themselves share that my sleep has been improved, my mood is improved, my concentration is good. So everything is correlated as Malvika said, and we also work on prevention. So yeah, it's better to prevent than curing. So yeah. Okay. We are open for questions if Yeah, anyone any has. questions? If you have any questions, you can definitely, even after we finish the session, you can write down the questions on Facebook. We are Facebook Live. आप अगर पावरफुल ज्ञान की पेज को फॉलो करते हैं, वहां पे आप आपके क्वेश्चंस डाल दीजिए. I'll see you in a day or two and try to reply to your questions and answers. ओके हाय मैम एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था Yes, hi Sheetal, how are you? या आई एम गुड Please come on the camera if you can. या वन या Yes. हेलो हाय Hi. एक्चुअली मैं कुछ दिनों से ऐसे थोड़ा ट्राई कर रही थी कि वजन कम हो जाए हाँ. तो मैं उसके रिलेटेड कुछ पूछना चाहूंगी कि बोलिए ना कुछ मैम. डाइट प्लान या कुछ ऐसे कुछ ऐप है जिससे हम अपना कैलोरी काउंट कर सकते हैं तो कैलोरी काउंट करने से तो इम्पोर्टेंट, सो बेसिकली कैलोरीज आर लाइक वे ऑफ कुकिंग ऑल्सो मैटर्स व्हेन इट कम्स टू. आप 80-20 का रूल फॉलो कीजिए, बहुत इजीली. आप पता 80-20 के रूल से बहुत इजीली आप कर सकते हैं. सो 80-20 का रूल क्या बोलता है? एक तो पहले मैंने बोला माइंडफुल प्रैक्टिसेस, आप थोड़ा स्लोली खाइए एंड फिर उसके बाद आप देखिए आपका पेट कितने कब भर रहा है. आपका पेट अगर 2 रोटी में भरता है तो 1.5 रोटी खाइए. लाइक 80% ही पेट भरिए, जानबूझ के 80% भरिए, पूरा पेट भरकर मत खाइए. 20% की जगह बचा के रखिए. 4 घंटे के बाद में आपको फिर से भूख लगेगी. ये जो 20% आपने जगह बचा के रखी थी ना, ये फिर से 100% हो जाएगी. तो 4 घंटे बाद आप फिर से 80% खाएंगे. फिर इवनिंग में फिर आपको 4 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, तो आप फिर 80% खाएंगे. और डिनर आप 80%. ऐसे आप 4 मील्स करते हैं हर 4-4 घंटे में, उसमें आप 80% ही खाते हैं. तो क्या हो गया, आपकी भूख थी 2 रोटी की, आपने आधी रोटी वहां कट कर दी, फिर आधी रोटी आपने लंच में कट कर दी, फिर इवनिंग स्नैक में आप अगर 4 बिस्किट खाते होंगे तो आपने 2 बिस्किट खाए, और डिनर में आपने आधी रोटी कट कर दी. ऐसे आपने क्या किया, आधी 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 150-200 कैलोरीज खुद ब खुद कम कर दी. और आपने क्योंकि हर 4 घंटे में खाया तो एसिडिटी भी नहीं हुई, आपका डाइजेशन भी प्रॉपरली हो रहा है. तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो गया और आपकी कैलोरीज भी खुद ब खुद कट हो गई. और एकदम से कोई फैट डाइट भी नहीं हुआ, रेस्ट्रिक्टिव डाइट भी नहीं हुआ, और आपने क्या किया, आधी रोटी कम की. सो ऐसे आपने आपके कैलोरी डेफिसिट खुद आप क्रिएट कर सकते हैं. अब आपको 10-15 दिन के बाद 1.5 रोटी की भी आदत हो जाएगी. मतलब ऐसा लगेगा अब तो ये भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपका वेट कम हो गया है. लाइक आपने 200 कैलोरीज कम कर दी आपकी डाइट से, और थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रहे हो आप, तो आपकी 300-400 कैलोरीज बर्न हो रही है. तो अभी आपका वेट कम हो जाएगा. लाइक सपोज 60 होगा तो 59 हो जाएगा. अब 59 को मेंटेन करने के लिए आपको जितनी कैलोरीज चाहिए आप उतनी ऑलरेडी खा रहे हो. अब आप आगे जाके क्या कर सकते हो, 1.5 रोटी के साथ अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे थे, तो अब आप चावल कट डाउन कर सकते हो. तो स्लोली एंड स्टेडीली आप आपका पोर्शन कंट्रोल खुद करके आप बहुत इजीली वेट लॉस कर सकते एक्चुअली मैंने शुरू ये किया था कि सुबह 1 कप मिल्क
और उसमें जो नाच मतलब यहाँ रागी बोलते हैं, हाँ हाँ। नाचनीचं पीठ वगैरे त्यामध्ये टाकून मतलब उसमें मिक्स करके फिर उसको पी लो। फिर 1 बजे लंच ब्रेक हो जाता है तो खाना खा लो पेट भर के, और फिर शाम का मतलब 2 टाइम पेट भर के खाना खा लेती हूँ, और एक टाइम फिर हल्का डाइट लेती हूँ, जैसे सुबह का मिल्क ही हो गया। तो मैंने अभी वो 3-4 दिन से शुरू किया था, बट बाकी टाइम में फिर एसिडिटी नहीं हो रही भरपेट ना? खाना खा रही। नहीं, मुझे तकलीफ कुछ भी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि थोड़ा पिछले लास्ट वन थोड़ा सा ईयर में मेक श्योर लगभग कीजिए 10 kg। थोड़ा सा मेक श्योर कीजिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स आए, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपके डाइट में, सब्जियां जैसे मैंने बोला 30 वेजिटेबल्स आपके वीकली डाइट में आने चाहिए। तो फाइबर वगैरह रहेगा तो वेट लॉस करने में ऐसे ही हेल्प हो जाएगी। ओके, तो ये ठीक है मेरा कि मैंने सुबह का जो स्टॉप किया है पूरा लंच, सिर्फ एक वो लिक्विड पे आपको ही। आपके वर्क रिलेशन पे कैसा फील होता है, वो सारी चीजें मुझे पूरा आपका 45 मिनट का हिस्ट्री लेना पड़ेगा मैम। वो चीज मैं आपको आपको स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन डाइट एट द मोमेंट नहीं दे पाऊंगी। सॉरी। ओके, ओके, थैंक यू। So any other questions? इफ आई मे आस्क अ Yeah. जनरल क्वेश्चन, जैसे कि डायबिटीज जिनको होता है तो उनको शुगर कंजम्पशन के क्रेविंग्स होते रहते हैं, Hmm. तो फिर व्हाट कैन बी डन ऑन अ जेनेरिक Yeah. So लेवल? basically, it's not just diabetic patients, you know. मैं पिछले 3 सालों से नो शुगर चैलेंजेस लेती हूँ, 21 days नो शुगर चैलेंज, जहाँ पे मैं सबकी शक्कर बंद करवा देती हूँ फ्रॉम द डे वन। तो आई हैव एक्चुअली सीन पीपल क्रेविंग फॉर शुगर, नॉन डायबिटिक ऑल्सो। शुगर इज 8 times more addictive देन अल्कोहल, जैसा मैंने बोला। इट इज ट्रू। बहुत सारे लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, चक्कर खा के गिरते हैं। बहुत सारे लोगों को चिड़चिड़ाहट होती है, जैसे अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वैसे। तो शक्कर की क्रेविंग सबको होती है। वो क्रेविंग को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में प्रोटीन उपयुक्त होने चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन आपके तीनों मेजर मील्स में रहता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने को 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। वो 4 घंटे आपकी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट कर रही है, तो फिल्ड है, उसमें भूख नहीं लगती। तो वो 4 घंटे अगर आप प्रोटीन प्रॉपर लेते तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप शुगर के लिए क्रेव नहीं करेंगे। दूसरा, अ, एक फ्रूट और 2-3 जैसे मीठे ड्राई फ्रूट्स है, जैसे 2 खजूर हो गए या अंजीर हो गया या रेजिन हो गए। जो टाइम पे आप यूजुअली शक्कर खाते हैं, वो टाइम पे आप एक आधी फ्रूट या 2 खजूर या 2-3 अंजीर, ऐसे 2-3 किशमिश आपने खा लिया, तो आपकी जो शुगर कंट्रोल है, वो शुगर क्रेविंग थी, वो एडेड शुगर की जगह आपने नेचुरल शुगर को दे दी। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन दैट वे। एंड ऑफ कोर्स इट्स योर माइंड सेट दैट क्रेव, लाइक जो क्रेविंग है ना, यू कैन गेट ओवर वाया योर माइंड सेट, सो एवरीथिंग इज योर। आई यस, एम थैंक यू। एडिक्टेड टू टी एक्चुअली। हाँ, तो मैं उससे निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। चाय, चाय कि जो है सुबह ना, एक कप चाहिए ही, आप चाय पियो ऐसे ना खा। मैम, चाय आप दिन में 2 पियो, मैं भी पीती हूँ। अभी मेरा ये प्रोग्राम का मेरी मम्मी का मेरे को एक्चुअली कॉल आया है कि चाय बन गई है, 6 बजे गए हैं। तो चाय जो है ना, पियो। चाय कॉफी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट चाय और कॉफी में शक्कर नहीं होनी चाहिए। बिलीव मी, मैं 2 मिनट और लूंगी ये बताने के लिए, ये मैं सबको बताती हूँ। चाय और कॉफी जो है ना, ये मैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां पे भी चाय है, पता है तेजल। एवरीवेयर यू गो देयर इज टी इन डिफरेंट फॉर्म्स। कहीं पे आपको ब्लू कहीं पे आपको ब्लू टी मिलेगी, कहीं पे आपको आसाम टी मिलेगी, कहीं पे आपको ग्रीन टी मिलेगी, पिंक टी मिलेगी। पर चाय जो है ना, इट इज वन ऑफ द सोशल इवेंट काइंड ऑफ थिंग। आप किसी के घर जा रहे हो तो आप इंग्लिश के घर जाओ, आप हिंदी के घर जाओ, आप कहीं कोई भी कंट्री में चले जाओ, आपको वो लोग चाय ऑफर करेंगे ही। तो चाय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोशल, लाइक सोशल गैदरिंग्स एंड स्टफ। सो जो चाय है, इसमें ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करता है। हमको हमको इन्फ्लेमेशन से बचाता है, हमको बहुत सारे पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, उस टाइम पे चाय के एंटीऑक्सीडेंट्स हमको बहुत हेल्प करते हैं। पर हम क्या करते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हम चाय में शक्कर डालते हैं। और ये जो शक्कर है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरा नलीफाई करके
सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज रोल प्ले करके। ठीक है, अभी मैं आपको एक टास्क एक चैलेंज देती हूँ सबको। 6 जने हैं, मैं सबको 5 जने हैं, सबको बोल रही हूँ। 1-2 दिन में आपके पास अगर सुबह काम नहीं है तो बढ़िया शक्कर वाली चाय पियो और बेड पे जाके लेट जाओ। बोलो यार आज काम नहीं है, मैं सो जाती हूँ। विदिन 15 मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। वही 2-3 दिन के बाद जब फिर काम नहीं होगा ना, उस दिन बिना शक्कर की अदरक वाली चाय पीना। मतलब दूध गर्म करना, चाय अदरक डालना, तो अदरक को उबलने मतलब दूध को थोड़ा उबलने देना, उसमें चाय पत्ती डाल के थोड़ी जैसे अपन चाय बनाते वैसे बना के छान के वो चाय पीना। और फिर बोलना यार आज काम नहीं, सो जाती हूँ। फिर देखना नींद आती है कि नहीं। एंड बिलीव मी, आपको अदरक वाली बिना शक्कर की चाय पी के नींद नहीं है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, ये हमको फ्रेश फील कराने के लिए, जो हम सुबह चाय पीते हैं ना, वो एक्चुअली हमको इसके लिए, वो चाय हम इसके लिए पीते ताकि नींद ना आए। बट बट क्योंकि हम उसमें शक्कर डालते हैं और हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ऑफिस पहुंचना ही है, इसलिए हम पहुंच जाते हैं। बट अगर आपको चॉइस मिले कि आप ऑफिस जाओ तो भी कोई, ऑफिस ना जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे सोते रहो, तो आप सो जाएंगे शक्कर वाली चाय। क्योंकि हमारा स्लीप साइकिल इतना खराब है, रात को 3 बजे सोए हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं हम लोग, चाय पी के ऑफिस के लिए 9 बजे निकल जाते हैं। अगर सोने मिलेगा तो सोएंगे नहीं। इसके लिए बिना शक्कर की अदरक वाली चाय पीजिए। कॉफी का तो कैफीन एज इट इज लाइक वो तो जग जाहिर है, सभी बोलते हैं कॉफी तो बिना शक्कर की पीनी चाहिए, क्योंकि कैफीन और शक्कर का कॉम्बिनेशन ही कहीं जमता नहीं है। सो या ट्राई इट। 7 दिन करके देखिए मैम, बिना शक्कर वाली चाय 7 दिन पीजिए। 8वें दिन अगर आपने बोला मैम मेरे को शक्कर वाली चाय चाहिए, मैं आपको दे दूंगी, पर आप वॉमिट कर देंगे। मैं बता रही हूँ, आपको शक्कर वाली चाय इतनी खराब लगेगी ना। आपको रियल टेस्ट ऑफ टी जब पता चलेगा ना अदरक वाली चाय का, तब आप, पर उसको 7 दिन लगेंगे यूज टू होने को। पहले 3-4 दिन तो सर दुखेगा क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स है शक्कर के। एक्चुअली मैंने वो मिल्क के चक्कर में छोड़ दी है अभी, बट मैं ये ट्राई करूंगी एटलीस्ट वंस अ डे विदाउट शुगर। Yes. और वो रागी वाला जो दूध पीते हैं उसमें भी शक्कर शहद गुड़ मत डालिएगा। नहीं, उसमें नहीं डाल, उसमें शुगर। सो या टाइम टू गो। या तेजल, एनी क्वेश्चंस? Okay. Yes. Any more questions? We can take a last question if there is any. How did you like the session? Bhavin ji, Reshma ji, Jay Lakshmi ji, if you can actually tell me how was the session? Thank you, ma'am. Time. So then maybe there's no questions. So should we? Yeah. We can pause for today. Yeah. You want to say something? Thank you so much, everybody, for giving me the opportunity to talk on one of the topics that I'm very passionate about. You can reach out to me on Instagram, that is DT Malvika Fulwani. I keep sharing the challenges I take up, the sessions that I take up, and if you have any queries, you can post down on the Facebook live link. I will definitely see to it to answer to them. Thank you. Yes. Thank you so much, all of you, for joining. And for upcoming webinars like these, you can follow Powerful Gyan Instagram, Facebook channels. Okay. Thank you. Bye bye.